Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. By the way, how many of you have a mind? The rest of you don't have it, right? Have it? So raise your hands. Are you sure? Okay. Thank you. Okay, let's see. Where is your mind? In your head? Here? Are you sure? वाह, कुछ लोग गुट्टों में. Are you in athletics में? Are you into athletics? Sports? Okay. It's not here. What you have here is called the brain. A very interesting study was made many years back ago when the second supercomputer was developed. It was called Cray 2. अच्छा, by the way, any time you want to ask a question, just raise your hand and ask. कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. ओके, इन बिटवीन पूछ सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, ये दो लैंग्वेजेस में जानता हूँ. यू कैन आस्क मी. सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ होती है. इट वाज कॉल्ड क्रे 2. जिस शख्स ने बनाया था उसका नाम क्रे था. द साइज ऑफ द कंप्यूटर वॉज बिगर देन दिस रूम एंड द वेट ऑफ द कंप्यूटर वॉज 15,700 pounds. Approximately 7 tons. Yes, sir. The speed of that computer was 4 million calculations per second. The speed of the computer was 4 million calculations per second. Now they compared it with an average human brain. वही जो B grade लाता है, C grade लाता है, it's an average human brain. It's okay. It's fine. And they made a study that if this Cray computer working at 4 million calculations per second continues working for 1 minute, which is multiplied by 60, then 1 hour multiplied by 60, then 1 week, then 1 month, 1 year and 100 years. So keep on multiplying. The number is so huge, it can't come on any calculator, not possible. So if this computer that works at the speed of 4 million calculations per second keeps on working 24 hours a day for 100 years, the total amount of work done by this supercomputer after 100 years is just equivalent to the work done by an average human brain in 1 minute. Subhanallah, isn't it? One of the greatest marvels of Allah subhanahu wa ta'ala, that we have a brain but nobody has taught us how to use it. You think you are using your brain. No, you are not. Using 2%, 3%, that's it, not more than that. What if you can use more of your brain? Then you are functioning as a genius. Genius method is one of the programs that we used to teach many years back ago. We have stopped teaching because we are already involved in high-tech training programs like NLP, hypnosis, Silva. So we are not teaching this, but this was meant for students of age bracket between 14 to 16 or 17. Each one of you sitting here has a genius. Everyone sitting here has a genius. The problem is this genius is sleeping. If you are in your sleep on your bed and you are a doctor and you are sleeping and a patient comes, is in an emergency situation and he wants you to help, but can you help? No, you can't because you sleep. So you only become a doctor when you are awake. When you are not awake, you are just a physical existence, a creation, that's it, nothing else. You are not a doctor. You are only a doctor when you are awake. So you are a genius only when you are awake and aware that you are a genius. Fight and flight mode is something different, that's connected with stress. Okay? Try to understand what I am saying. If you are not aware you are a genius, then you are functioning at a very lower level. You can do your work, you can get grades, you can do, but what you are supposed to do and can do, the potential that you have inside is untapped. And that is what I want you to become aware. Now the reason for these sessions that we have started in FPS and hopefully will continue with other schools is because of the flood situation in Pakistan. This is not a situation that will be okay in 2 months, 3 months, 1 year, no. This is going to take years.
and there are different levels. पहले तो पानी आया. The second level is diseases, बीमारियां. Third is they'll come to the city because they don't have anything to eat or wear. Looting will go on, theft will go on, right? And that has started already in Karachi. The fourth is rehabilitation of these people, which requires millions and billions of rupees. उनको घर बना के देना, उनको schools बना के देना, hospitals, all this will take around 10 years. Now you, in few years, will be in a position to do something in your life. Whatever career that you choose, जो path आप choose करेंगे career आपका, regardless of whatever it is, but you can do a lot for Pakistan. And that's what we are here for, to give you an insight of what are the qualities of a genius. और उस genius की quality के बाद फिर मैं आगे आपसे बात करूँगा. फिर उरूज मेरी बेटी है, she'll teach you a technique, and this technique is amazing. हमने apply किए, get whatever you want. So we'll start with few things. आप सब देख सकते हैं इसको ना? You all can see it, right? This is our organization. This is me. Don't ask me how old I am. How to become a genius, and this is what genius. They use their brain differently. Now, I want you to develop these 5 qualities inside you. First is ownership. What is ownership? Taking responsibility of something. What else? और बताया ना, what about you? आप बड़े चुप हैं. What's your name? Mannan. Mannan, are you okay? Sure. So what do you think is ownership? Okay. Yes. Can you put it in short, one sentence? Basically, you want to create abilities to excel. Okay. He is called couples की हम एक टेक्निक थेरेपी करती है, उरूज करती है. इसमें amplifier. He is amplifier. He can't give short answers. He will always amplify, right? I am a condenser. Uruj is a condenser. We talk very short, except when we are giving a lecture. So ownership basically means taking responsibility of something that you believe it's yours. So the first thing that comes into ownership, अगर ये fan ज़रा सा चला दें तो I'll be grateful because it's quite hot. ज़रा सा, if anybody can, बहुत तेज़ मत कीजिएगा. If I come to your house and I see a lady and I ask you ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मेरी मम्मी है, right? She is my mother. या ये कहेंगे she is our mother? नहीं कहेंगे ना. She is my mother. This is ownership. So how many of you believe that Pakistan is my country? My country. My, not ours, mine. Each one takes ownership of this country that we live in. So this is my country. Ownership बहुत सारी चीज़ों में होती है. Whenever you take ownership, you also take the responsibility. The first ownership is about yourself. You own yourself. You are good, you are not good. You are clumsy, you are not clumsy. You are intelligent, not intelligent. You are poor, rich. Accept the way you are. Take ownership. Don't try to look at others and try to change because they appear to be good. No, never do that. Ownership comes with responsibility. आप सुबह उठ के बाथ लेते हैं? Do you keep yourself clean? How many of you keep your room clean? सच्ची बताओ. सच बताना, मेरे साथ झूठ नहीं. ठीक है, it's okay. But it's your room, right? So you are responsible. Take ownership. If you want your mom to clean up your room, then that's not ownership. So in life, ownership is something that you own and take responsibility. You fail or you pass. Don't point your fingers on your school, on your teachers, on the electricity, on the government or your parents. Whatever you are, wherever you are solely responsible for your life. Nobody else is responsible. आप खुद responsible है अपनी life की.
आर यू ओके? कुछ सोच रहे थे आप? नहीं सोच। मेरी आदत है, मैं देखता हूँ बड़े गौर से हर एक को, एवरीबडी. लेट्स ट्राई समथिंग बिफोर वी गो टू कमिटमेंट, बिकॉज कमिटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल? श्योर? अदरवाइज यू वुडंट बी इन FPS. हेड स्टार्ट है तो FPS का ना. Let's see. Now listen carefully. I'm going to make you do something, and I want to check how intelligent you are, so that you know your principal and your teachers can also watch and see how intelligent you are. Uncross your legs, dear. That's the first thing you do when you are in a lecture. Do exactly what I ask you to do. Nothing except what I ask you to do. Only what I ask you to do. ठीक है? आप वही करेंगे जो कहूँगा करने को, कुछ और नहीं कहेंगे सिवाय उसके कि जो कहूँगा करने को, वही करेंगे जो कहूँगा करने को. पहले देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है. इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड. इसको 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 गुड. इसको ग्रेट. So listen, do exactly what I ask you to do. Nothing except what I ask you to do, only what I ask you to do. Ready? Raise both your hands. Come on. दोनों हाथ. Keep your eyes open and keep looking at me. मेरी तरफ भी देखते रहिएगा. Now wave your right hand and wave your left hand. So right and left. Bring your left down. Right को जरा सा ऊपर raise करें. Now take a deep breath and open your fingers. Exhale, close your finger. Great. Inhale, open your fingers. Exhale, close your fingers. Now, inhale, open your fingers and think of somebody you love. Exhale, close. Again, inhale and think of somebody you love. Open your fingers. Great, close your fingers. Now, make a hole. Look through this hole. Look at my face. Put it on your chin. Where is your chin? See? Now what happened? दुनिया में जब टेलीविजन आया तो we have become visual. We don't hear, we see. And that is why instructions are not followed. Either at school or in your daily day-to-day life at home, you do not follow instructions. You see instructions. And one of the great studies that was recently made was that if they could use medical studies teaching students visually, a person can become a doctor in 6 months. Visual learning is so powerful now because we have started using our eyes more compared to our ears. So now ownership के बाद we know responsibility, and after responsibility we come on to commitment. Commitment is for a purpose in life. For example, what kind of commitment do you have in your life right now? Anybody can tell me? कौन से commitment है आपके? Studies, commitment, okay. कुछ तो बोलो, ऐसे ना करो. Studies, हाँ? Okay, जरा loudly बोलिएगा so everybody can understand. Anything else you're committed to? What is your commitment? 5 ऑस्कर चाहिए. ओके ग्रेट. एक्टिंग में. ओके गुड. दैट्स अ विजन, दैट्स योर डिजायर. कमिटेड टू द विजन कहेंगे उसको. व्हाट अबाउट यू गर्ल्स सिटिंग, बॉयज सिटिंग एट द बैक, द लेडी विद द मास्क? हो चुका है कोरोना के हो रहा है कि होने वाला है? ओके, दैट इज अ गुड थिंग. इवन बिफोर कोरोना वी ट्रेवल अ लॉट. वी ट्रेवल वर्ल्ड वाइड. हम ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप्स. तो आई रिमेंबर जब कभी हम किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इवन बिफोर कोरोना, यूजली जैपनीज एंड चाइनीज पीपल ऑलवेज वेयर अ मास्क वेन एवर दे आर इन अ पब्लिक प्लेस. इट्स समथिंग दैट दे हैव लर्न्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? पोल्यूशन है, डस्ट है, कई चीजें हैं. सो एनीथिंग अबाउट कमिटमेंट. व्हाट इज कमिटमेंट? कम ऑन, टेल मी. हाँ, okay, promises, okay. Dedication to a cause, okay.
व्हाट इज योर कमिटमेंट? आप बताइए मुझे, आपका कमिटमेंट क्या होगा? कमिटमेंट को हम उर्दू में अहद भी कह सकते हैं, ठीक है? अहद क्या है आपका? स्टडीज को छोड़ो, उसके अलावा सब एक ही चीज बोलेंगे, स्टडीज स्टडीज स्टडीज। आप बताओ इनको, हाँ कुछ बनना है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स अगेन अ डिजायर एंड अ गोल। व्हाट इज योर कमिटमेंट, योर पर्सनल कमिटमेंट? Okay, good. That's it. Make myself a better human being. That's a commitment. Now, एक दफा एक चीज मैं बताता चलूं which really help people. Are you committed to helping each other? Are you committed to be a part of this education system that you are in? Are you committed that when you grow up, you will pass on this education to the less privileged? Are you committed to that? Are you committed to making Pakistan a better place for those who are underprivileged? Commitment. World War II में the British Army was losing a lot of soldiers because they would die of injuries, and the reason was when a soldier is injured because of a bullet wound or a bombshell, the other soldiers were fighting, they could not take him to the medical camp. So वो injuries की वजह से, bleeding की वजह से he would die. So they created a concept of buddy, और soldiers को कहा तुम एक दूसरे के buddy हो। अगर तुम्हारे बडी को इंजरी हो इन द वॉर, फ्रंट के ऊपर, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट टेक हिम टू द मेडिकल कैंप। दिस बडी कॉन्सेप्ट हेल्प देम टू सेव 30% लाइव्स ऑफ सोल्जर्स। 30% सोल्जर्स की जिंदगी बच गई इस बडी कॉन्सेप्ट। नाउ बडी कौन हो सकता है? योर पेरेंट्स आर योर बडीज, योर फ्रेंड्स आर योर बडीज, एंड इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट योर कंट्रीमैन आर योर बडीज, राइट? So if anybody is there who needs help, your responsibility and commitment is that you will help people whenever anybody is in need. Anything, anyone can be in need. So your commitment should be for yourself to improve as a better person, function at the level of genius, like geniuses do. Genius में और आम आदमी में पता है क्या फर्क है? कभी अखरोट खाया है? When you open a walnut, it has two halves and they both look like brain. Our brain is one, but it is divided into two hemispheres, right hemisphere, left hemisphere. Most of the education in school, college, university is left brain education, which means whenever you study most of the subject, your left brain is active, right is not working as much as it should. So you are using only a part of your brain that is involved in analytical thinking, logical thinking, rational thinking. The right side is creative. How many of you have been in love? कोई हाथ नहीं उठाएगा. Don't you love your mom? Don't you love your dad? Don't you love your siblings? आप उठेगा हाथ. पहले एकदम से सारे डर गए कि डॉक्टर साहब देख रहे हैं, right? When you love someone, your parents, your siblings, your grandparents, then your right brain starts working. When you read a poetry, listen to a music, your right hemisphere starts to work. और geniuses के साथ ये होता है कि when they think, when they're trying to make a decision, when they're trying to solve a problem, both hemisphere of the brain work together. ये genius होता है. So अपनी education तो ज़रूरी है दुनिया के लिए, right? You need a degree to get a job or to go abroad or do something, but at the same time, for God's sake, please start using your right brain also. Start using your right brain also. जी सर. Okay, वैसे तो टाइप you have to go through a training, but छोटी टिप्स दे देता हूँ आपको. Let's say आपके लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन है? When you are studying, revising chemistry. एक मिनट. Do we have the chemistry teacher here? No. Okay. Okay. Maybe the chemistry teacher can later on have a talk with me, and I'll teach her or him, whoever it is, how to make the students take interest in chemistry. Now, chemistry, हालांकि chemistry is a very wonderful subject. मैं तो इसमें maths बोलेंगे. Maths भी है. Okay. Now, अच्छा. Whenever you are studying chemistry, let's say you have your books in front, you have your textbook in front, and you are studying, revision कर रहे हैं, study कर रहे हैं.
बैकग्राउंड में, अब तो बैकग्राउंड तो पाकिस्तान से चला गया, अब तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो आगे रखा है तो फोरग्राउंड है, पीछे रखा है तो बैकग्राउंड है। कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हल्का हल्का, यानी आपको डिस्टर्ब ना करे, बट पीछे आपकी आवाज आती रहे, इंस्ट्रूमेंटल, वर्ड्स नहीं जी, कोई भी ऐसी चीज जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या फिर नेचुरल साउंड, चिड़ियाओं का चहचहाना, साउंड ऑफ द वाटर सर, ये बैकग्राउंड में आपको चलाएंगे, राइट। होगा क्या, केमिस्ट्री आपको पसंद नहीं है, अब लेफ्ट ब्रेन आपका काम कर रहा है केमिस्ट्री को स्टडी करने में, राइट ब्रेन खामोश है। जैसे ही बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलेगा, आपका राइट हेमिस्फीयर काम करना शुरू करेगा। जैसे ही राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा, वो सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आता, इट विल बिकम वेरी इजी, बिकॉज बोथ हाफ्स ऑफ द ब्रेन आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब मैं मिसाल दूं इसकी। फॉर एग्जांपल, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, राइट, अब आपके पास पैसे नहीं है। अब लेफ्ट ब्रेन कहता है पैसे होते हैं नहीं, गाड़ी कैसे आएगी, तो यहां आप गिव अप कर लेते हैं। इस तरह लाइफ में बड़ा मुश्किल है, तो हो नहीं सकता, पहले कभी किसी ने नहीं किया, आज तक ये हुआ ही नहीं है, कैसे मुमकिन है। दिस इज लेफ्ट ब्रेन कॉलिंग यू। राइट ब्रदर्स साइकिल मैकेनिक थे, दे वर नॉट इंजीनियर्स, साइकिल मैकेनिक, मिस्त्री थे, साइकिल बनाते थे। दे मेड द फर्स्ट फ्लाइंग एरोप्लेन इन द वर्ल्ड। हाउ? बिकॉज दे डिड नॉट लिसन टू द लेफ्ट ब्रेन, they were using the right brain, they were thinking, creating, believing it's possible, it's possible, it's possible, and they created it. Okay, that's chemistry. Great, thank you very much. Now empathy and positive thinking, Uruj will take over and she will make you understand. मैं कुछ बातें कर लूँ, फिर Uruj will give you a practical session on how to get your goals in life. जिंदगी में जो आपके मकसदियत है उसको कैसे, मैं थोड़ा सा आगे चला लूं ये पहले। ओनरशिप में ये चीजें आती है। ओनरशिप जब आप लेते हो, लेट्स से एक माँ जो है वो ओनरशिप लेती है अपने बच्चे की, शी इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। बच्चा क्या बनता है, किस तरह करता है, डेडिकेशन है, कंट्रोल है, मैच्योरिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। शी इज अकाउंटेबल। कल बच्चा गलत रास्ते पे निकलता है तो शी फील्स अकाउंटेबल कि मैंने तो तरबियत दी थी, या मेरी, अक्सर आप फिल्मों में भी देखते हैं डायलॉग, हाय मेरी तरबियत में क्या खामी होगी, मेरी परवरिश में क्या खामी होगी, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। वैसे मैं कह दूंगा आपके टीचर्स जो हैं, आपकी प्रिंसिपल जो है, ये आपको दे देंगी ये, ठीक है ना। ये इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़ात की, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। How do you keep yourself clean, your clothes clean, your room clean? That's your personal responsibility, right? बाल प्रॉपर कट होने चाहिए, यानी हाइजीन का बड़ा ख्याल। फैमिली, आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। योर पेरेंट्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस, दिस वेलबींग, उनकी हेल्थ, उनका पीस ऑफ माइंड, आप रिस्पॉन्सिबल है। वेन यू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली, योर पेरेंट्स गेट हर्ट। मेरा बेटा है अली, दो बेटे हैं मेरे, अली मुर्तज़ा, उरूज मेरी बेटी है। बोथ आर इन कैलिफोर्निया, एंड व्हेन दे वर 5 years old आई स्टार्टेड टीचिंग देम मेडिटेशन। जब वो 6-7 साल के थे तो जो मेरे वर्कशॉप होते थे कराची में, पीसी में होते थे, अभी भी होते हैं, उसमें आई यूज्ड टू मेक देम सिट 10 to 5 डेली 3 days। इनडायरेक्ट लर्निंग होने लगी, एंड येट they became great leaders, great communicators। उन्होंने अमेरिका में जाके बड़ा कमाल का काम किया। But it so happened that Ali became a father। मैं उरूज वहाँ पे थे, उसका बेटा हुआ, मेरा grandson, he was I think 6 months old when we went there, and it was the first child। So both Ali and his wife, they did not know what to do। बच्चा बोल नहीं सकता, वो रोता है, अब समझो कैसे, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको बात कैसे देनी है। सो अली टोल्ड मी कि अब्बू, नाउ आई रियलाइज कि आप लोगों ने हम लोगों को कितनी मुश्किल से पाला। दे रियलाइज, राइट। उस वक्त पता नहीं, अभी आपको शायद पता ना चले। आजकल बच्चे ये कहते हैं कि आपने एहसान किया हम पर पाल के, आपका फ़र्ज़ था। भाई फ़र्ज़ था पालना, स्कूल में भेजना फ़र्ज़ नहीं था।
गवर्नमेंट स्कूल में, फ्री वाली स्कूल में भेज सकते थे। उनका फर्ज था खिलाना, मगर KFC और मैकडोनल्ड नहीं। प्याज और आपको रोटी भी खिला देते, वो फर्ज था। पर जो लाइफ इन्होंने देने की कोशिश की, अपनी तमन्नाएं, अपनी आरजू, अपनी ख्वाहिशात ख़त्म करके आपके लिए ज़िंदगी दी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल दैट यू आर कनेक्टेड विथ। एक चीज़ याद रखना, अभी रिसेंट एक स्टडी थी, टेट पे भी उसका एक लेक्चर था, उसमें इन्होंने वो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जिससे इंसान जो है लॉन्ग लाइफ जी सकता है। लॉन्ग लाइफ, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। पहले और दूसरे नंबर पे क्या थी? पहले नंबर पे सोशल इंटरेक्शन, अकेले मत रहो, बी विथ पीपल, स्पेंड टाइम विथ पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, और जो लोग कनेक्टेड है उनके साथ। बीइंग सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। एक पार्क में एक शख्स बैठा हुआ था, 60 ईयर्स ओल्ड। अब मेरे जैसा कोई आदमी उसके पास गया, सलाम किया, कहना सर हाउ आर यू, ये वो, हाउ ओल्ड आर यू, 60 ईयर्स ओल्ड। इतने में एक उसका दोस्त आके बैठ गया, इसने उसको भी सलाम किया, पूछा सर आपका नाम, हाउ ओल्ड आर यू, 60 ईयर्स ओल्ड। कहते नहीं, आप नाउ बोथ ऑफ यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, नॉट 60 ईयर्स। इतने में एक और दोस्त आ गया उसका, वो भी 60 ईयर्स ओल्ड था। तो अब इसने कहा कि नाउ ईच वन ऑफ यू इज 20 ईयर्स ओल्ड बिकॉज योर एज इज डिवाइडेड बाई 3 एज ईच वन ऑफ यू is connected with each other. So your age is now 20 years, not 60 years. An age is just a number, so कोई फर्क नहीं पड़ता। You got it? Social, ये घर में बैठना, पूरे दिन मोबाइल फोन लेके बैठना, stop doing it. Because a mobile phone will not get you a good life. I'm telling you this. Next is ecological. अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मैं देखी आज, मैं बड़ा हैरान हुआ। एक बहुत अच्छी खातून, वो अच्छा काम करने गई और उस अच्छे काम में नीयत अच्छी थी, उसने पानी के अंदर मछलियों को खुराक डाली, बड़ी खुश खुश के आज मछलियों को मैं खुराक डाल रही हूँ। गलती ये करके कि साथ साथ उसने शॉपिंग बैग भी फेंक दिया। नीयत उसकी अच्छी थी, मगर बाज दफ़ा खुशी में आप ये भूल जाते हैं कि आप गलती भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर उसका इंटेंशन नहीं था, वो समझदार खातून है, उसने गलती से शॉपिंग बैग डाल दिया। अब लोगों ने जो क्रिटिसाइज करना शुरू किया उसको। यहाँ एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ज़िंदगी में इसको कहते हैं ना, गालिब कहते थे गिरा लगा लें, मेक श्योर यू गिरा लगा लें। इस चीज़ को अच्छी तरह समझें। पता है कैसे तरीका है गिरा लगाने का? कान को पकड़ें, थोड़ा सा इसको मलें, अब जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुने। इन लाइफ ऑलवेज सी द गुडनेस इन पीपल, नॉट द वीकनेसेस। समझे आप? लोगों में, हर इंसान में प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। हमारा समहाउ मेंटल मेकअप ऐसे हो गया है, या परसेप्शन ऐसा हो गया है कि वी ओनली सी द ग्लास इज हाफ फुल, हाफ एम्प्टी। दो है ना, राइट? हम एम्प्टी पार्ट को ज्यादा देख रहे हैं, फुल पार्ट को नहीं देख रहे। सो वी सी पीपल विथ वीकनेसेस इंस्टेड ऑफ सीइंग द गुड। Everybody has a genius, everybody has an angel. The next is spiritual. Spiritual से मुराद आपका religion हो सकता है। Your responsibility towards religion also is very important. You have to put it differently. जो मेरे और आप में spirit है, रूह है, we are right a spirit, we are a soul in a human body. So इसकी कुछ demands हैं। स्पिरिट को ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वन इज सर्विस, खिदमत खल्क, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ थैंक यू। अभी जो फ्लड अफेक्टीज के लिए काम कर रहे हैं, JDC के पास में गया और देखा वहाँ पे, एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड दैट यंग मैन स्लीप्स 1 or 2 hours डेली, इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। अब्दुल सत्तार रेदी, अ ग्रेट नेम, राइट? It was all a spiritual work, because when you serve people, others, without expecting anything in return, your spirit is elevated. आपकी रूह तरोताज़ा होती, ताकत मिलती है। Second is gratitude, शुक्रगुजारी। Always be show gratitude. Always be grateful. So first, gratitude is Allah, right? जिसने आपको पैदा किया। दूसरा,
आपके पेरेंट्स, तीसरा आपके टीचर्स। एंड बिलीव मी, मेरे पास वक्त नहीं है समझाने का, पोजीशन ऑफ टीचर्स इज हायर देन इवन योर पेरेंट्स। जिससे इल्म मिलता है आपको, उसका मकाम माँ बाप से ज़्यादा अफजल है। पूछो क्यों? पूछो। हाँ, गुड। इसलिए कि माँ बाप आपको आसमान से ज़मीन पे लाते हैं और ये आपको ज़मीन से आसमान की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू। उरूज विल कम एंड द रेस्ट। हमारे पास असल में टाइम बहुत कम है, वरना कभी फुल डे का करेंगे तो विल एंजॉय।